जानी तुम मैंने आसव पचार लगे ना कि जानी तमें जो नसर पसर आम से कथा जानू Hello everyone, I am Sudipta ma'am. Welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. हाँ गायत्री ने भी नियाती ने भी सकाल 6:30 जो मैंने आसिक पहुंची पार समस्त को नहीं जी मत नौ ना देखा मत नौ ना देखा तुम मानक ने सत्य प्रिया कहीं कहीं प्लेस टा टिके पर रिवील कले हबनी क्लास आरंभ तुम मान दरकार ना slow and steady wins the race, right? Today's date is 20th, right? आसो तो तमाने SPC 10 सब नेलणी ना नेइना को माने सब SPC 10 कोड नेलणी को माने नेइना मत देखवा हां पायल शुभम को नहीं किसी कोरापुट आसंत पिकनिक आई एम हियर ओके सुजीत डन एई तो आरंभ होला हमर पिकनिक देन एस सेशन चलीबो एमदी आमे केबे जिबा समस्ते मिसिकी स्टूडेंट्स एंड सर एंड मैम आंटोलिना तमे केतेटा प्लेटफॉर्म रो सर और मैम मानक सहित जिवो को जानी कि से टाइम कहूची अरे नाही तम माने को मु रिवील करबी वेदांग क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप रे तम माने को देखियो सकाळ 6:30 रु पूरा रेडी स्टडी हेकी जदि मते नेबे ताले मु फोटो देबी देखिबो SPC 10 code जदि आपण माने यूज करू संती these are the facilities I will give to you that the first how to prepare second thing the timetable सेटा मु तम मानकर मैनेज करी कि देबी तम बस ताको फॉलो करिवो देन देखिवो गोटे सीट आपण मानकर ही हेथिबो Yes, Rohit, welcome. How to make notes, how to revise or practice, how to maintain discipline, that is the important thing. How to crack examination, how to manage all the subjects that I will guide over the students who will take the batch under my guidance. That is SPC 10. Asa. Satta. WhatsApp karibo ei number ko jo mane bi SPC 10 under re jiba ko chahibe. बाकी रहा उत्कर्ष बैच ओटावाले सीजीएल आपण मानक जोति पाई मु एटा कहू जे एसपीसी 10 दैट इज फॉर द उत्कर्ष बैच माने सीजीएल बैच आपण माने 1199 दे के बैच को नहीं पारी ओके देन महापैक जदि आपण माने नहीं भी पारिबे 3499 नहीं की यार वैलिडिटी रहउची 1.5 माने 1.5 वर्ष जाय वैलिडिटी एंड या भीतरे अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आउ गोटे आपण माने कहू छी आपण माने वेदांत क्लास रा एप्लीकेशन को जाई की सब एग्जामिनेशन रो ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपनकर लागी जाई छी एंड जदि आपण माने 199 नौचंती एटा सीजीएल बैच रो मॉक टेस्ट उतरे आपण को 20 टा सेट मिलिबो एंड ए 20 सेट जदि आपण माने प्रैक्टिस करि कि जाउचंती किछि आपण मान को दरकार नै बस कांसेप्ट क्लियर हेबा दरकार जदि आपण माने थिबे कांसेप्चुअल क्लियरेंस रहबा दरकार आफ्टर दैट आपण ए मॉक देकी जाउचंती देन तापर मते आपण रिजल्ट निजे ही आसी कि मिठा धरी कहबे मैम जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू आसा बाकी रहिला प्रभा 2.0 PO एग्जामिनेशन 999 रे वैलिडिटी NTPC RRB एग्जामिनेशन 799 ओके आसा मैम बहुत खुशी अच्छी मैम बहुत खुशी अच्छी तो लास्ट को गोटे सॉन्ग की एथरे खुशी अच्छी आंटोलिना खुशी अच्छी ना मैम अच्छा मते कहउछ के मते लागला तमे लिखुछ मैम मु बहुत खुशी अच्छी ते लास्ट को गोटे सॉन्ग पिकनिक पाई उछ ना What is this wording? Asa, the best preparation for tomorrow is doing your best today. माने जानी ना मु को consequences रे बे क्लास करूची गैस सीवियर हे जाई छी जस्ट एबे गैस मेडिसिन खाइली क्लास को नोची still feeling very uncomfortable माने बहुत uncomfortable feel होची पूरा कोजी feel होची not at all feeling good still I'm taking the class as Sunday तमरा क्लास ऑफ रहइबो सीजर एग्जामिनेशन मुंडा ऊपर Oh, aso. The first question mate kuha. When did the Ghumsar uprising take place? Ghumsar uprising kebe apankara?
तम मानक आगुरी किसी जना पड़ू नथो जेतेबेले मु कहिबे एमती होउची त माने सब जानि दम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो मते कोन हबो दैट इज ऑप्शन सी 1835 टू 1837 कोन हबो 1835 रु 1837 कारण घुमुसर पहिला माने आपण मानक माइंड को आसी जिवो 1835 एति की जिंस मन रहउछ आउ किछि ऑप्शन सैटिस्फाई करूची कि मु तो डीएसआर 500 खाई के भी मोर गैस खत्म होउनी कोन आ तम माने मते मेडिसिन चलो एटा ओटे मो पाखु बोते हेरिडिटरी आसी जाईची मो बापा गोठु एटा मो पाखु हेरिडिटरी आसी तो एटा जीवनी 1835 रु 18 कोन 37 को रिलेट करिवे एंड एथिरे आपण मानकर कोन कहिबे ना खोर्धा रे आपणकर कंध माने पार्टिसिपेशन करिथिले एंड लीडरशिप यार किए नैथिले जदी आपण को क्वेश्चन पचारा गले किए नैथिले ना डोरा कोन डोरा विषय नैथिले मने पडुची डोरा विषय आपणकर लीडरशिप नैथिले एति की हन नै मते खो हो दबो हैला एति की मने रहउची तो दैट मींस 1870 जदी 1817 कहिला पाइकर रेविलियन 1835 कहिले घुमुसर ए दुटा जिंस आपन को मन रखा को पड़ी क्लियर चलो नेक्स्ट 18 बट जदी इंक्लूड करूछ 1835 सब बेले आपन माने घुमुसर देबे 1817 कहिले ओनली पाइकर रेविलियन को आपन माने रिलेट करबे दैट्स इट चलो नेक्स्ट So the Ghumsar Uprising, a significant tribal revolt against the British rule, primarily took place from 1835 to 37, led by the Kandha tribal chief Dora Bisoi. And mate कहलो Dora Bisoi को sudden death परे किए एटा को मंग धरी थिले तांकर निफ्यू थिले किए थिले आफ्टर Dora Bisoi किए नै थिले ना केबे सुनिचो चक्रा क्वेश्चन एटा आपनकर आगु को अछि आंसर दबो मत आसो नेक्स्ट मते को हु वाज द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द घुमुसर अपराइजिंग्स तो मते को एबे त मान को कहिली घुमुसर अपराइजिंग्स रे आपण मानकर पार्टिसिपेशंस किए करिथिले हु आर द पार्टिसिपेंट्स किए थिले क्विक किए थिले ऑब्वियसली आपण मान को त एबे कहिली काहा को रिलेट करबो मराठा मान को नुह मराठा माने कोन ना दे वर द प्रीवियस रूलिंग पावर रे थिले सो याको एलिमिनेट कर देले कंध मुंडा भोई त आपण माने कहिली कोन कहिबे काहा सहित रिलेट करिवे ऑब्वियसली आपण माने काहा ना कंध सहित रिलेट करिवे क्लियर और नॉट तो कंध हिली रीजन जेते थिला फॉरेस्ट रीजन जेते थिला सेठिकर जेतिको कंध ट्राइबल पीपल माने थिले से माने समस्त आसीके एठी जॉइन करिथिले विथ द कोन ना डोरा बिसोई नेक्स्ट so the main participants in the Ghumsar uprising were the Kandhas next question mate ko what was the main reason behind the Ghumsar uprisings in Odisha in 1835 jaldi kuwa in Odisha in 1835 what will be the right answer 1835 कहले मते को introduction of new agricultural policies ता पई एटा हेथिला कि yes or no रे मते खाली आंसर दबो yes or no okay after that कोन कहिची suppression of missionary activities total नुह dissolution of the Bhanja ruling family एटा हेई परिबो कि yes or no yes तो एठी आपनकर कोन ना मयूरभंज एरिया रु ही तो आपनकर एटा स्टार्ट हेथिला तो हमें कहि परिबा कोन बाघ जतिन बाघ ताकू भी रिलेट करी मन को से टाइप रा आपनकर जो ट्राइबल रिवोल्ट सब हेतिला दोज आर रिलेटेड विथ द दोज एरिया बालेश्वर मयूरभंज एरिया को आपण माने रिलेट करिवे एंड ए भंज रूलिंग फैमिली रो कोन सडन आपण मानकर कोन डिस्क्रिमिनेशन देखा जाइतिला एंड दो हमें कहि परिबा दैट वाज ट्रिगर्ड एंड दैट वाज द बैकग्राउंड कॉज फॉर रिवोल्टिंग द घुमुसर रिवोल्ट एतिक मन रखि परिबे that is the immediate trigger हेतिला and was the dissolution of the Bhanja ruling family many revolts आपण मा रिलेट करि परिबे जोटा कि फर्स्ट इमीडिएट ट्रिगर हेतिला जेहेतु भंजा फैमिली को संगे संगे कोन डिस्क्रिमिनेट हे जाइथिले ता सेटा एक्चुअली डिव कॉज थिला आफ्टर दैट बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस थिला कोन बट मेन कॉजेस आपण माने सुनेबे So the main reason behind the Ghumsar uprising in Odisha is 1835 was the dissolution of the Bhanja ruling family which served as the immediate trigger for the rebellion. The local Kandha tribes had a long-standing loyalty to the Bhanja kings and were dissatisfied with the British administration's interference in their traditional governance. After that, next who was the leader of the? Very good evening, Bagho. On लिखु जासी अच्छा who was the leader of the Ghumsar uprising in Odisha in 1835 1835 सहित मते टिके रिलेट करी कि कहिलो
कहा सहित हम रिलेट करिबा who was the leader of the Ghumsar uprising in Odisha 1835 कहिदिली कोन ना फास्ट आपण मा रिलेट करिवे डोरा बिसोई को जेते बेले डोरा बिसोई कर डेथ हे जाइथिला तापर आसीथिले की ना चक्रा बिसोई तो घुमुसर जेते बेले भी क्वेश्चंस आपन को पछाइबा आपण माने कोन रिलेट करि परिबे मते कुओ फास्ट आसीबो डोरा बिसोई इफ द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल देन गो थ्रू द चक्रा बिसोई बिकॉज़ स्टार्ट हेतिला डोरा बिसोई कठू तांकर जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज डेथ आपनकर चक्रा बिसोई जी कि तांकर कोन थिले ना ही वाज द नेफ्यू ऑफ डोरा बिसोई सी आपनकर बंग धरि थिले दैट्स इट नथिंग एल्स हैला मैम माई चक्रा बिसोई हां की चक्रा बिसोई करथिले तुमको कॉल करी करथिले ना की आसा The leader of the Ghumsar uprising in Odisha 1835 was Dora Bisoi जाको हमें कमला लोचन डोरा बिसोई बोली कहूचे हैला कमला सॉरी एक्चुअली कमला नहीं कमला लोचन डोरा बिसोई ही वाज द फीमेल वन हैला नेक्स्ट मते को व्हाट वाज द डोरा बिसोईस रोल इन द Ghumsar uprising डोरा बिसोई का रोल कोन थिला ए एंड बी हबो जदि ऑप्शन ए एंड बी चूज करथियो जदि ऑप्शन ए एंड बी नाही फास्ट आपनकर डोरा बिसोई आरंभ करथिले डोरा बिसोई कर डेथ परे तांकर पुतुरा चक्रा बिसोई ताकू आगु को नेथिले हेति की क्लियर फर्दर कंफ्यूजन नाही मते पछारनी आसा मते को व्हाट वाज डोरा बिसोईस रोल इन द Ghumsar uprising डोरा बिसोई कोन करथले ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर सपोर्टिंग द रेविलियन ही वाज द ब्रिटिश ऑफिसर से थिले कि डोरा बिसोई बिल्कुल भी न थिले देन हमें कहां से रिलेट करि परिबा मते कुओ देन ही वाज अ ट्राइबल लीडर एडवोकेटिंग फॉर पीस Next mate kuha he was a key figure in leading the uprising against the British authority he was the key figure of the Ghumsar uprising Ghumsar revolt सहित relate करि परिबा he was against the British not with the British even not among the British officials right गोटे एलिमिनेट कलेनी ऑप्शन गोटे एलिमिनेट कलेनी माने सब ऑप्शन तो एलिमिनेट हे जो he was a religious figure बिल्कुल नहीं आपण मानकु जोटा क्वेश्चंस अकॉर्डिंग डिमांड करूची क्वेश्चन कोन डिमांड करची ता अकॉर्डिंग सैटिस्फाइंग आंसर आपण माने देबे ऑटोमेटिकली गुडा एलिमिनेट हेई सी बरे बाबा आसा तो नेक्स्ट मते को व्हिच मेथड डिड द ब्रिटिश यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू दैट रिलेट टू द डिस्कंटेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन द Ghumsar uprising कोन पचाला आउथरे को व्हिच मेथड डिड द ब्रिटिश यूज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू को मेथड रे आपनकर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होतला कैन एनीवन से को लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश कौन थिला मते को जल्दी व्हिच मेथड एठी मेथड कथा पचरी छी जल्दी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस कोर्सिव मेथड टैक्स एग्जेम्पशंस और द बार्टर सिस्टम कौन थिला राइट आंसर मते कहइबो को राइट आंसर सब मारुचो सी टैक्स एग्जेम्पशंस कोथि पाई आपण मानकर ऑप्शन बी अछि कोन दैट इज द कर्सिव मेथड तो ए कर्सिव मेथड मींस कोन आपण को कहूची ना द ब्रिटिश एम्प्लॉयड कर्सिव और द हार्स मेथड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू समटाइम्स कोन हुई आपण मान को कोटा कंफ्यूज करे कहलो हां सेटा पॉइंट कहूची समटाइम्स गोटे गोटे छोटो छोटो वर्ड सेटा आपण माने को माइंड को एमिति मैनिपुलेट करे आपण माने से वर्ड रे माइंड खटांतिनी कि ता माने कोन हेथिबो इजीली आपण माने को सेटा को एलिमिनेट करि दे कि जो ऑप्शन ता आपण माने को ठीक इजी लागुची हियरिंग रे इजी लागुची सुनिबा पई आपण को भल लागुची कहिबा को भल लागुची आपण माने आगुड से वर्ड सुनि संती अक्वेंटेड अछंती से वर्ड प्रति आपण को लागुची सेटा ठीक हबो बट व्हाट इज दैट इज द कोन ना द कोर्सिव पहुचेटा कोन दैट मींस द हार्स मेथड जोटा कि पूरा हार्ड पूरा क्रुएल मेथड अछि लोक माने गोटू कलेक्ट करिबा हमें कहि परिबा ओके दैट वाज सिंप्लिफाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट so the method to collect land revenue which led to significant the discontent among the tribals and was a major cause of the Ghumsar uprising up to 50% of the land revenue was collected using force which greatly angered the tribal communities and local landlords जमीदार मानकु एटा ट्रिगर करिथिला तापरे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपण माने जानि संबी वॉलंटरीली किछि कंट्रीब्यूशन करिबा बाकी रहला टैक्स एग्जेम्पशंस मींस कोन एटा कहउछि ना टैक्स को बिल्कुल उठै दैथिले एटा तो बिल्कुल हबनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बार्टर सिस्टम माने केबे आगु सुनिछो जानिछो व्हाट डू यू मीन बाय द बार्टर सिस्टम्स माने कोन क्विक के कहि परिबो व्हाट डू यू मीन बाय द बार्टर सिस्टम दैट मींस हमें कहि परिबा जो एक्सचेंज हमें करूछे
कौन बाटर सिस्टम मीन्स जदि आपण माने गुड्स एक्सचेंज करूसंती इन केस ऑफ गुड्स आपण माने को कौन ना गुड्स ही एक्सचेंज करबा को पड़िबो तो एक्सचेंज सिस्टम ता तले गुड्स बदल रे गुड्स आपण माने धान देबे ता बदल रे धान मिलिबो मुग देबो ता बदल रे मुग मिलिबो तो एटा को हमें कौन कहूचे ना आपण माने को धार दिया जाउतला एक्सचेंज सिस्टम को हमें कहूचे दैट इज द बाटर सिस्टम क्लियर द बाटर सिस्टम means the exchange of goods for goods without the use of the money रा uses नथिला सेति पय हम ताको बाटर सिस्टम कहूचे क्लियर एति की बुझी पारलो ना नाही मते को डन एंड कर्सिव means आपनकर किछि नाही दैट्स द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द हार्श एंड कोन ना कर्सिव मेथड means बहुत ही क्रुएल मेथड क्लियर हां सपोज गोटे जगह रे राइस अछि मो पाखरे व्हीट अछि सो एक्सचेंज करबी हां इन केस आपण करि परिबे मनी रा यूज बिल्कुल हबनी इन केस हमें ताको कहि परिबा हैला बाकी एठी आपनकर गोटे अछि ही वाज अ रिलीजियस फिगर एडवोकेटिंग फॉर द सोशल रिफॉर्म्स तो मते कहिलो व्हाट डू यू मीन बाय द रिलीजियस रिफॉर्मर ए जो रिलीजियस रिफॉर्मर को मने पड़ला मोर एबे टिके कि रिलीजियस रिफॉर्मर हमें कहि परिबा कि द पर्सन हु सीक्स टू प्यूरिफाई एंड इंप्रूव द रिलीजियस प्रैक्टिसेस बाय रिमूविंग व्हाट ना जेते सब आपनकर सुपरस्टिटिंग पावर थिला जेते सब सुपरस्टिटिंग एंड प्रमोटिंग मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज थिला सेते प्रमोट करी के आपनकर चेंज हो जेमिति आपन माने कहि परिबे राजा राममोहन राय आपनकर कोन करथिले ना अपोज करिथिले काहाकू ना आपनकर सतीदाह प्रथा को राजा राममोहन राय अपोज करिथिले इवन प्रमोट करिथिले कोन द रेशनल द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म को से प्रमोट करिथिले ताको आपण माने कहि परिबे दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्पिरिचुअल फिगर देन आपण कहि परिबे माने आपनकर स्पिरिचुअलिज्म आपनकर द रिलीजियस रिफॉर्म आपण कहि परिबे स्वामी विवेकानंद आपनकर रिवाइज करिथिले कि ही रिवाइव्ड द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द वेदांत कोन आपण माने निजे चेक करी कि जानि परिबे गुरु नानक आपनकर करथले रिजेक्ट करिथिले द रिचुअलिज्म को एठी एंड कोन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आपनकर गुरु नानक करथले माने वैरायटी को जागा रे केते बड़ बड़ गुरु माने पंडित माने ताकू अपोज करिसंती इवन कबीर ताकू भी नै जा कबीर क्रिटिसाइज करिथिले द रिलीजियस हाइपो माने कोन हिपोक्रेसी को तो ताकू भी आपण माने रिलेट करि परिबे हन नै को एई सब थिला आपनकर रिलीजियस रिफॉर्म्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट the question आपण मानकर एठी थिला that is the cursive method that means the very harsh method clear आसा नेक्स्ट मते को एक्चुअली के टाइम लागु जदी गोटे गोटे बुझेबा ना बहुत टाइम जीवो 40 टा क्वेश्चन कला बेलु को आपनकर राती 12 टा हे जीवो still I am trying आसा who took over the leadership of the uprising after the arrest of Dora Bisoi in the Ghumsar uprising quick कहला टिके हाँ हेलो अच्छा who took over the leadership of the uprising after the arrest of Dora Bisoi in the Ghumsar uprising कौन होबा माइक ऑफ करके करे आई एम नॉट जोगेश सर माइक ऑन करके कथा हेबा लागि ओके आसा who took over the leadership of the uprising after the arrest of Dora Bisoi in the Ghumsar uprising किए थिले तांकर पुत्र किए थिले ना चक्रा बिसोई थिले obviously no more explanation needed आसो the leadership of the uprising after the arrest of Dora Bisoi was taken over by his nephew Chakra Bisoi what was the outcome of the Ghumsar uprising मते कुहै जो Ghumsar uprising रे outcome कोन आसी थिला quick के कहि परिबो से दिन सुनुछि को दिन सुनुथिली तुमको मु थोड़ी ना कहली जोगेश सर खराब कहली सर मो पे बहुत भलो इज द बेस्ट वन आसो what was the outcome of the Ghumsar uprising रे outcome कोन आस्तिला complete suppression of the rebellion हेतिला establishment of an independent state एटा त बिल्कुल हे नथिला negotiated settlement with the British or the transfer of power to local leaders transfer of power local leader देखो B and D आपन पे दीटा ऑप्शन मु एलिमिनेट एठी करि देली कोन अब राइट आंसर टिके कहिलो कोन हबो ऑब्वियसली आपनकर ऑप्शन ए हबो द करेक्ट ऑप्शन कोन होची ना कंप्लीट सप्रेशन ऑफ द रेबिलियन एठी आपनकर किछि हे नथिला ए नुहे केबे काई
आपणकर ए जो घुमुसर अपराइजिंग टा कंप्लीटली सप्रेस है नथिला ए केबे नुह लेखा होची लुका कोथि पई कंप्लीटली तो सप्रेशन करा जायतिला नेगोशिएशन तो है नथिला आपणकर that was completely suppression of the rebellion. The Ghumsar uprising was ultimately crossed by the British forces after a prolonged resistance. What do you mean by no? We'll discuss that. Asa. Next mate ko when did the Bhuyan uprising take place? Luka class 8 रे ताकू discuss करिवा. Well discuss करिवा. एबे नै ठीक है. मते को when did the Bhuyan uprising take place? 1868, 1870, 1872 or 1874? ब्रिटिशर्स का सह गोटे वन टाइम नेगोशिएशंस हेथिला बहुत दिन परे हेथिला बा ओके ठीक अछि मो 8 नंबर टाकू टिके राउंड करि दोछि मे बी ए एंड सी दीटा को भीतर अछि पॉइंट दीटा ताकरे अछि सो ताकू देखिबा आसा मते को when did the Bhuyan uprising take place? 1868, 1870, 1872 or 1874? जेते बेले Bhuyan uprising कथा पचारिबा आपण माने कोन कहि परिबे 72, 74, 70 or 68 सब बेले आपण मानकर आंसर कोन आसीबो ना 68. The Bhuyan uprising was also known as the Ghumsar rebellion. जदि instead of the Bhuyan आपण मानको क्वेश्चन ने Ghumsar rebellion देइथिबो ताहाले आपण मानकर आंसर भूल होपनी तो हाँ टिके देखिबा ताको लास्ट डिस्कस करिया व्यस्त होनी 8 नंबर क्वेश्चन मोर मन रहले लास्ट डिस्कस करिया आसो सो प्राइमरीली टुक प्लेस इन 1868 लेड बाय द रत्ना नायक कहा को जदि पचरा गला किए टेक पार्ट करिथिले केउझर रा रत्ना नायक को रिलेट करिवो केउझर सहित आपण रिलेट करिवे भुया रेबिलियन एतिकी जिंस तीनटा जिंस भुया रेबिलियन इज अदरवाइज नोन एज केउझर रेबिलियन आपनकर भुया रेबिलियन को किए लीडरशिप करिथिले ना रत्ना नायक दैट्स इट एंड इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश इंटरफेरेंस and unjust policies of the king through another measure one occurred in 1891 and it was ta soito mane yara long version prolonged version ame kaiba 1891 वाला under the Dharanidhar नायक हैला after that ame कहि परिबा ए जो भुया सॉरी हां भुया रिबेलियन आपनकर एक्सटेंड है कि 1891 रे धरणीधर नायक भी ताकू कोन मंग धरिथिले नेक्स्ट वन को where did the Bhuyan rising take place where did आम घर केउझर मैम जा हो किरण तमर के भाग्य तमे मां तारिणी को पाखरे जाई कि रहउछ where did the Bhuyan rising take place मते को Bhuyan rising केबे टेक प्लेस हेथिला when did it was केबे क्विक ऑप्शन बी सॉरी where did पचाची मु when did कहतेली ओके कोठी ना Bhuyan पचारला माने आपनकर केउझर बालेश्वर कहले त माने कोन कहबो ना आपनकर बालेश्वर सहित कोन सॉल्ट लॉ को आपण माने सॉल्ट लॉ हेले 1930 को रिलेट करि परिबो सॉल्ट लॉ को पूरी हेले आपण माने ता सहित पाइक रेबिलियन किसी इंपैक्ट पड़िथिला सो आपण माने एठी पाइक रेबिलियन को भी रिलेट करि परिबे खोरधा को भी पाइक रेबिलियन सहित माने कोन रिलेट करि परिबे क्लियर 1917 नेक्स्ट मते को सो द Bhuyan rising primarily took place in the Ghumsar now in the this is a feudatory state in Odisha with major uprising led by the figures like Ratna Naik 1868 and Dharanidhar Naik in 1891. Jodi Ratna Naik katha pacharla 1868 the year is very important. If the question is asking about the Dharanidhar Naik the year should be 1891 1868 1891 dita jaka apanakara relate karibe Ghumsar rebellion or taku ame kon कहूचे ना Bhuyan rebellion बोली clear हाँ समस्त जानी चंदी मो घर कोठी आसा नेक्स्ट मत अरे वाह आसी गला आपनकर मोर गाइडेंस अंडर रे आपण मानकू नेबाकू ही पड़ी बिकॉज़ मु आपण मानकू ए सब प्रोवाइड करिवि जोटा अलगा टीचर्स माने भी प्रोवाइड करू चंदी बट इंस्टेड ऑफ दैट नियंतु मिलिमिसि की प्रोवाइड करिवो हैला आसी जाओ एसपीसी 10 अंडर स्टिल who was the leaders of the but मु कहूची गाइस याकू आपण माने एसपीसी 10 नौचंदी न नौचंदी कहा गाइडेंस अंडर रे जाउचंदी दैट डजंट मैटर आपण मानकू जॉब क्रैक करियर अछि ता पूर्व आपण मानकू जस्ट ए 199 वाला टेस्ट सीरीज टा को गाइस प्लीज नहीं जाओ ना गोटे आपण मानू कहली ना आपण माने कंप्लेन भी करिवेनी जस्ट लाइक ए रामबाण हैला बस मते को who was the leader of the Bhuyan uprising रा लीडर कोन कहतिली वन एंड ओनली रत्ना नायक बट जदि एठी आपनकर ऑप्शन कोन आसी देथिला ना धरणीधर नायक देई देथिबो गाइस कंफ्यूज होबनी हैला धरणीधर नायक देई देइछि
एंड सेठी ऑप्शन ए एंड बी दबो इफ ए एंड बी देनी जेहेतु रत्ना नायक फास्ट आपनकर केबे 1868 रे आरंभ करितले तेनु आपण माने फास्ट पर्सन सहित जिबे instead of the second one धरणीधर नायक आपनकर 1891 आसीतिले later on सो ताको आपण माने एठी कोन एलिमिनेट करि देबे क्लियर वृंदावन भंज ये आपनकर पळेबे कोठी की ना मयूर भंज सहित रिलेट कर दबो हला ये मयूर भंज ना ना तो छाडी दियो so Ratna Naik was the primary leader next mate kuha what was the reason behind the Bhuyan uprising in April 1868 jete bele Bhuyan uprising आपनकर हैला 1868 रे मते कुह what was the main reason behind that कुह कान्हू महापात्र हाथ परे दबा आंसर दिया प्लीज कुह ब्रिटिश इन्वाजन ट्राइबल राइट्स वायोलेशन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कौन हबो ऑप्शन बी okay done asa so the Bhuyan uprising or the rebellion in April 1868 led by the Ratna Naik in Ghumsar Odisha was primarily a response to the British backed installation of a tyrannical king that is the धनुज आपनकर कोन धनुजय भंज को आपनकर तांको अगेंस्ट निजर राजा बोली ठिया करिवार तांको that was the rebellion first time हेथिला that's it next mate ko whom did Ratna Naik want to place as the king during the Bhuyan movement ebe hi कहली काहा को निजर राजा भाबरे निजर प्रतिनिधित्व भाबरे काहा को से छिडा करिवा को चाहुथिले अरे तुम माने काई हार्ट दोछ मो पाखरे ऑलरेडी हार्ट गोटे अछि तुम माने देले कोन मो हार्ट काढी कि तुम हार्ट को लगेबी सेंति तो हेई परिबो ना को राइट आंसर गाइस क्विक ऑप्शन सी देथिली रे तमानक बा एबे पढैली की से ऑप्शन सी गायत्री तमे पर्सनली मते आज क्लास होला पर वीडियो कॉल करियो मु तम मुहडा देखिबी मु सीरियसली वीडियो कॉल करियो मुह देखिबी दैट वाज धनुजय माने कहिली काहा को से कहिबा को चाहुतिले बट whom did Ratna Naik want to place as the king during अच्छा sorry wait oh what was the reason behind the Bhuyan uprising April sorry एटा 1868 कथा कहला जते बेले कि आपनकर के थिले 1868 गोटे मिनिट रुह चिल्लाओनी कंफ्यूज हे गली मु बेबे रत्ना नायक एठी रत्ना नायक कथा पचारी छी बट एठी आपनकर क्वेश्चन आपनकर कोन अच्छा एठी भी रत्ना नायक कथा पचारला रत्ना नायक तो निजे नुह धनुजय इटा के भीतर कोटा तो गोटे मिसकंसेप्ट अछि गोटे मिनट ड्यूरिंग द Bhuyan movement in 1868 the tribal people led by Ratna Naik were protesting against the oppressive rule of the new king Dhanurjay Bhanja and the British government conceptual mistake actually ना गायत्री ठीक अछि हां गायत्री तुम वीडियो कॉल कर दबे मु तम मुह देखिया बसले तमे मो मुह देखि दबो चलियो ना सी इज कंफर्म बिकॉज़ धनुर्जय आपनकर ब्रिटिश माने ताकू स्टैंड करिथिले बट एटी रत्ना नायक का को स्टैंड करथिले ना वृंदावन भंजन को स्टैंड करथिले तो इट वाज जस्ट ए माइनर मिसकंसेप्ट आसो सो बट राजा किए थिले ना ट्राइबल लोक मानकर प्रतिनिधित्व करूथिले वृंदावन भंज बट ब्रिटिशर्स का को स्टैंड करथिले ना धनुजय भंज दैट्स इट हैला आसो so what was the consequence for Ratna Naik's attempt to place Vrindavan Bhanja as the king को जल्दी आंसर दियो यार गुड नाइट रामचंद्र खटुआ गुड नाइट आसो मते को व्हाट वाज द consequence for Ratna Naik's attempt to place Vrindavan Bhanja as the king कोन थिला मते को धनुर्जय को बदल रे वृंदावन भंज को से माने ट्राई करथिले राजा बोली बनेबा पई बट हेई नथिला बट स्टिल मते को consequences कोन थिला he was imprisoned for lifetime he was banished from the kingdom he was captured and awarded capital punishment he was declared the new king तो जमा नुह राइट आंसर कोन ऑप्शन सी ऑब्वियसली कोन हेतिला आपनकर he was captured and awarded the capital punishment कोन जोटा पनिशमेंट तांको अनाउंस करा गला सेटा दिया जायथिला I am absolutely fine Mahadev Ratna Naik was captured and awarded capital punishment with 6 others for his attempt to the place Vrindavan Bhanja as the king of Ghumsar this occurred after the failure of the Bhuyan uprising Ratna Bheli 1868 okay clear yes Hitesh Kumar Sahu right option C is the right board option ha next question mate ko how many people were awarded capital punishment ebe कहली
कैपिटल पनिशमेंट आपनकर केते जण मिसी कि नेसंती टोटल हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट along with रत्ना नायक ड्यूरिंग द भुया मूवमेंट along with पचरिछि ताहाले आपण माने कोन रिलेट करि परिबे 5 6 एटी कोन लिखा हिजी कोडे गला रे with राइट आंसर कोन हबो इठी आपण माने करो ऑप्शन सी कोन रत्ना नायक along with 6 others क्लियर चलो नेक्स्ट अच्छा मैथ्स तो सेंटेंस वाला क्वेश्चन आसी गला मजा आसी जीवो मते एबे को लिस्ट 1 लिस्ट 2 एटा बढ़िया लागेना करिया पे गोटे मैच हे गेले आउ तीनटा धड़ाधड़ आपण माने एलिमिनेट कर देबे सो एटा टिके मैच कर देबा 1 1 1 1 अछि 3 2 4 3 अछि दैट मींस यदि ए एंड डी रहिला ताहले बी एंड सी आपण कर एलिमिनेट हे गला हां चलो सो फर्स्ट को मैच द फॉलोइंग घुमुसर अपराइजिंग आपण मानकू केतेरे कहिली घुमुसर अपराइजिंग फर्स्ट आपण मानकू रिलेट करथिली क्विक घुमुसर को का सहित सी सहित वेरी गुड सो इटी ए कोन हे गला ना सी मींस सॉरी ए टा आपण कर कोन 3 ए टा 3 तो ए वाला सॉरी 2 2 हां 2 3 कोन 35 पा हां ए टा 2 ता माने ए रे 2 कोटा अछि ए दीटा अछि ए एंड बी आपण कर एलिमिनेट हे गला एलिमिनेशन प्रोसेस रे जीवा राइट देन आपण कर कोन अछि ना केउझर भुइया रिवोल्ट आपण मान को कहा साथ रिलेट करेली जल्दी कुआ एठी आपण कर कोन अछि ऑप्शन बी को जीवा राइट तो बी रे अछि 3 एंड 2 तो 2 टा जेहेतु आपण कर ऑलरेडी पळै छी ताहाले हम 3 सहित ताको रिलेट करि परिबा टी कारण लेफ्ट टा 1891 आपण मान रिलेट करछुंती कोन चक्रा बिसोईଙ୍କ सहित ताहाले राइट आंसर एठी कोन हबो ना ऑप्शन सी कोन देछि ऑप्शन सी 2 सहित 4 बिकॉज़ 2 टा आपण कर ऑलरेडी नै सारी छी तो एठी डी ऑप्शन टा एलिमिनेट हे गला हां ना नै कुआ क्लियर केमिति एलिमिनेट करिवो आसो तो घुमसर अपराइजिंग 1835 केउझर भुया रिबेलियन 1868 एंड आपनकर फ्रीडम स्ट्रगल फॉर बिरसा मुंडा 1894 वीर सुरेंद्र साय टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश 1857 क्लियर चलो नेक्स्ट मते को व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द ना-anka फेमाइन हेबार मेन कॉज कोन कोथि पई आपनकर ना-anka फेमाइन हेथिला कोन ना-anka दुर्भिक्ष रो ओडिया को ट्रांसलेट सॉरी दुर्भिक्ष को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करि दियो क्विक ड्रॉट फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक कोन हबो राइट आंसर हां कोन हबो राइट आंसर ऑब्वियसली आपनकर ड्रॉट ही हबो ड्रॉट को ही त हमें दुर्भिक्ष कहउछा भाबी बारे कोन अछि द ना-anka फेमाइन 1866 सेते बेले आपनकर एग्जैक्टली सेम ईयर रे कोन हेतिला 1966 रे हमर उत्कल दीपिका हेतिला क्लियर कौरी शंकर ड्राइंग को अपन रिलेट करि परिबे वेरी क्लियर आसो नेक्स्ट मते कुहो in which year was Odisha struck by the devastating famine known as the ना-anka दुर्भिक्ष केबे हेतिला एबे कहली 18 एठी देखो कोन लिखाइ छी एठी एठी के आसो भाई देखो कोन थिला ना द फेल्युअर ऑफ द मॉनसून रेन्स इन 1865 was the main natural trigger तो आपण माने एठी रिलेट कहा करिवे 1865 66 ना 1866 टू 67 ए दीटा छडा आपण मान को एलिमिनेट करि देली दीटा ऑप्शन भितर कोन रिलेट करिवो तो ऑब्वियसली आपण माने 18 मु जानि छी कंफ्यूज हेबे बट आपण माने नेबे कोन डिवास्टिंग जो पीरियड ता स्टार्ट हेथिला मु सेटा देखैली आपण मान को कंफ्यूज करिबा लागि बिकॉज़ आपनकर स्टार्ट हैला ना-anka दुर्भिक्ष जेते बेले आपण को गोटे पीरियड पचाउची स्टार्टिंग रु केते दिन जाय से एक्सटेंड करूची सेटा को हमें कहिबा दैट इज द पीरियड नॉट कि बिफोर दैट कि आपनकर केबे जिंसटा हैंडल हेई नथिला क्लियर विश्वरंजन सॉरी मने नाही देखो द डिवास्टिंग ना-anka famine also known as the great famine of Odisha primarily occurred in 1866 time रे भंजो आई थिंक थिले the famine period which began with a monsoon failure in late 1865 हैला सबु तो आपनकर ब्रिटिश अंडर को पळिथिला 1803 रु आ कोन सेते बेले आपनकर जे भी सब राजा थिले समस्त ब्रिटिश अंडर रे ही थिले ओके चलो नेक्स्ट मते कुओ which of the following factors led to the ना-anka famine of 1866 to 67 कंफ्यूज कहीं है बेनी अच्छा पिंटू कहीं है बेनी पिंटू कमे रखु जाना PN7 हां which of the following factors led to the ना-anka famine 1866-67 कौन थिला sancti rainfall or the premature cessation of rainfall or the underestimation of the situation by the government or all of the above government option देखि देउछो कमाने कुआले जीव हेठी नेइबो हो so the correct option होजी all of the above the ना-anka famine of 1866-67 was caused by the combination of all the natural and administrative factors clear next मते कुआ sorry
What was the estimated death toll of the Na-anka famine of 1866 to 67? Estimate केते जनकर डेथ हेतिला गाइस मते को एस्टिमेट करंतु आपण अप्रोक्सीमेटली केते जनकर डेथ हेतिबो एनी कैन गेस 1 million 2 million 3 million or 4 million कौन हबा राइट आंसर दैट इज 1 million हैला सो 1 million आपण माने नै परिबे अस अगेन गाइस कहूची को माने सब एसपीसी 10 नेबे जो माने सब एसपीसी 10 गाइस नेबे विदाउट एनी हेजिटेशन नै परिबे एंड फर्स्ट टाइम त माने नेले फर्दर तम संग माने कहिबे कि मु नै की कोन फैसिलिटीज पाइछि एंड मैम केते वेल गाइड करिछ मा बेसी किछि कहबिनी बिकॉज़ सर माने अछंदी मोटू बहुत ही एक्सपीरियंस बट स्टिल as I am very new but still त मान को कहिबी कि नियो देन तम राइट हाउ नियो हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल एवरीथिंग हाउ टू मेक नोट्स केमती नोट्स बनेबो स्टार्टिंग रे देखंतु नोट्स तो समस्त प्रोवाइड करूछंदी बट तम एंड रो तमे नोट्स केमती बनेबो गुड स्टूडेंट पर्सपेक्टिव रो दैट आई विल प्रोवाइड टू यू एंड हाउ टू रिवाइज और प्रैक्टिस जो नोट्स ता बनै छ को वे रे आपण माने प्रैक्टिस करे सेटा को आपण को 2 थर 3 थर 4 थर कोन करबा को पड़िबो नै Next achi how to maintain discipline, how to crack exam, how to manage all the subjects I will provide to you. Asa, next question. What was the primary crop on which the people of Odisha relied for food during this period? ये जो Na-anka दुर्भिक्ष आपनकर थिला Na-anka दुर्भिक्ष टाइम रे मते कहिलो थैंक यू प्रहलाद मते को what was the primary crop on which the people of Odisha relied for food during this period हमें कौन कहि परिबा समर व्हीट ऊपर थिले फिर मेज ऊपर विंटर राइस ऊपर और बार्ली ऊपर कहा ऊपर बेसिकली थिले कहा ऊपर थिले ऑब्वियसली दैट वाज फॉर कोन ना विंटर राइस ऊपर थिले आल्सो नोन एज अमन और शरद राइस कोन अमन और शरद राइस बोली हमें ताकू कहिबा नेक्स्ट मते को who was the chairman of the Na-anka famine commission Na-anka famine commission जेतेबेले हेइथिला तार चेयरमैन किए थिले क्विक Na-anka famine रो चेयरमैन किए थिले आपनकर गोटे मिनिट आंसर दियो Who was the chairman of the Na-anka famine commission? Robert Clive, Charles Wood, George Campbell, Charles Taylor. किए थिले दिव्य सिंह देव का शासन 90 ईयर ड्रॉट हेतिला Na-anka बोली को हाउ को मते राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन दैट इज सी किए थिले ना आपनकर जॉर्ज कैम्बेल थिले किए थिले ना जॉर्ज कैम्बेल को मन रखिबो So the famine commission established in December 1866 to inquire देखो December मन रखिदल तमे जानिबो विंटर वाला राइस को अपन माने आराम से रिलेट करि पारिबे and to inquire into the causes and the circumstances of the devastating Na-anka famine of the great Odisha famine देखो कहा सहित रिलेट करिबो ना कैम्बेल को सहित बेल बजे कि से कहा को अलर्ट करि नथि सेथि लागि Na-anka दुर्भिक्ष आसिथिला राइट नेक्स्ट Who was the chairman of the first famine commission? First famine commission रो एठी आपन को कोन पचरला ना who was the chairman of the Na-anka famine commission बट एठी आपन मानकर कोन first famine commission करथिले जेते बेले फर्स्ट टाइम पे ओडिसा रे दुर्भिक्ष आसीतिला सेटार आपनकर किए थिले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बोली नहीं मेसी अच्छा तो मते को सर रिचर्ड स्टाची सर मैकडोनल्ड जेबी लेल एंड द टी मॉरिस किए थिले ऑप्शन ए The chairman of the first famine commission 1878 to 1880 was Sir Richard Stachey, who led the inquiry into the Great Famine of 1876 to 78, resulting in a significant recommendation for the famine relief and the development of the first famine code. The first famine is जहाँ भी आपनकर क्षयक्षति हेतिला ता अगेंस्ट रिलीफ रिलीज करिथिले आपनकर फर्स्ट किए ना रिचर्ड स्टैच नेक्स्ट मते को व्हिच कमिशन अंडर द ब्रिटिश रूल prepared famine code आपण मन को एबे पचारि थिली किए थिले famine code आपनकर किए करथिले एबे कहिली वेरी गुड स्टैची चलो सो द स्टैची कमिशन वाज द फर्स्ट famine जे आपनकर डेवलप करिथिले कोन रिलीज करथिले आपनकर रिलीफ एंड द कोड भी ये कोन रिलीज करिथिले नेक्स्ट मते को व्हेन वाज द Na-anka famine commission appointed ए Na-anka famine केबे अपॉइंटेड हेतिला कहिली डिसेंबर रे हेतिला और नै को मते बट डिसेंबर केबे रे हेतिला राइट वाज डिसेंबर
1866 रे आपनकर नौका दुर्भिक्ष हेतिला 67 रे आपन मानकर बेटा एस्टैब्लिश हेतिला कि से मारुछि बी आसा सो नाउका famine commission also known as the George Campbell Walla commission was appointed in the December 1866 next mate kuha which educational institutions was upgraded to a high school in 1866 in Odisha after the naanka famine mate kuha which educational institution was upgraded to a high school just like a institution thila but after the naanka durbhikha eta upgrade heigala to the high school to kiye thila quick Bhubaneswar University Cuttack Jilla School or option Puri College or the Khordha Institute तो Bhubaneswar and Khordha को कौन delete कर देबी कि right answer एटी कौन हबो ना that was the Cuttack Jilla School the first school of Odisha that was the Cuttack Jilla School का अपन relate करंतु after the devastating naanka famine 1866 to 67 the British administration took some steps to improve education in Odisha in 1867 that is the Cuttack Jilla School was upgraded to a high school marking an important development in modern education in the region clear etiki next mate ko in which year did the Cuttack Jilla School become a college kebe hela apankara jilla school ru college आपण जानले इंस्टीट्यूशन रो स्कूल हैला बट स्कूल रो कॉलेज केबे हैला केबे कम ऑन क्विक आंसर मी दैट वाज 1860 1876 1882 1890 केबे थिला वेरी गुड सब कोन आंसर दो ऑप्शन बी वेरी गुड 1876 वेरी गुड पीतांबर अनन्या किरण कुमार PN7 सौरभ सब right 1876 the Cuttack Jilla School became a college known as Revensa College in 1876 when it was upgraded to a first grade college though the broader institutions that is the Revensa University today began in 1868 with intermediate classes at the school clear chalo next mate ko who became the first graduate of the Odisha during the post Nank era time re जस्ट परे परे फास्ट ग्रेजुएट आपनकर किए थे फास्ट ग्रेजुएट सबु बेले तमन को चिल्लै की पढै छी सबु बेले तमन को चिल्लै कहै छी फास्ट ग्रेजुएट फास्ट लॉयर ए सबु आपनकर किए ना मधुसूदन दास थिले द फास्ट ग्रेजुएट ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द पोस्ट नांका देखो एमिति क्वेश्चन पचारिबा यदि सिंपली आपन माने को पचारि देला ना फास्ट ग्रेजुएट ऑफ ओडिशा आपन माने घोषि देछंती मधुसूदन दास बट एठी आपन माने ट्रिक करी पचारिबा देखो जेमिति धरणी किए धरणीधर आपनकर कंफ्यूज हे गले धरणीधर कोन मारले ऑप्शन ना ऑप्शन फकीर मोहन सेनापति को मार देले ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर ताको सहित रिलेट करिवे को लिखिथिले 6 माण 8 गुंठू मामू लछमा ए सब लिखिचंती से हैला क्लियर राधानाथ राय फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया प्रोज प्रोज रो जणे पोएट्री सॉरी पोएट्री हैला पोएट्री रो सी प्रोज रे प्रोज पोएट्री हम प्रोज रो सॉरी चलो नेक्स्ट मते को and he who earned his BA from the Kolkata University in 1873 making him a pioneer in the Odisha education social reform sorry ma'am late रे देखिली धरणीधर बरहाल त मने धरणीधर देई दोनो से जो नायक धरणीधर नायक देई दियो आसा name of the two individuals who significantly contributed to the development of modern Odia literature during the post-Nanka era. Guys, दी जन individual कहला धरणीधर एटार आंसर तमे टिके देखो देखा देलियो जल्दी जल्दी धरणी कोन आंसर दोछंदी देखिबा सेटा हिथबा राइट धरणी बाबू आंसर टिके दियो अनिता फकीर मोहन एंड कोन मारछु सब अच्छा राधानाथ राय अछंती कोन तमे चोटा उठे इमिति शॉर्टकट मारू छ ना अनिता हां मैम आज मो मेसेज देखु नांती अरे सतीश भाई कोन धरणी कुआडे गले तांकर मेसेज सी आसा so name of the two total आपनकर कोची ना two individuals who significantly contributed to the development of the modern Odia literature and the post Nanka तो जोठी फकीर मोहन सेनापति थिबे आपण माने सेठी के दौड़ी के आसी that's it clear किछि दरकार अछि no next मते को which two locations in coastal Odisha
Okay, which two locations in coastal Odisha saw the development of railway connections during the post-Na-anka era? कहाँ सहित रिलेट करिबा? That was the famous name in Odisha. प्रति गाँव रे जन जन धरणी बाहरिबे. आसो. कटक टू पुरी, भुवनेश्वर टू कटक, पुरी टू खोर्धा और भुवनेश्वर टू खोर्धा. कौन कहूछ ऑप्शन डी? ऑप्शन डी कौन अछि? भुवनेश्वर टू खोर्धा. कटक टू पुरी नुह. मते कुह which two locations in coastal Odisha saw the development of railway? ए जो post Na-anka era माने केते कथा पचरला 1866 परे obviously तो भुवनेश्वर आपनकर फॉर्म हैला केबे भुवनेश्वर केबे आपनकर फॉर्म हेइसी मते टिके कहिला पंडित दळ मते को भुवनेश्वर टा फॉर्म केबे हैला जे तम मानक माइंड को भुवनेश्वर आसुची as a district sorry as a आपनकर कैपिटल शिफ्ट केबे हैला 1948 और 49 आपण मान नउचंती देन 18th वाला को आपण माने रिलेट केमिति करूचंती मते कुह रिलेट केमिति करूच मुंड भी टिके खट्टा को सब बेले मुंडेले केमिति हबो रे आसा राइट आंसर कोन होची ना कटक टू पुरी तो ड्यूरिंग द पोस्ट ना-अंका 1866 फेमाइन एरा आपनकर फर्स्ट रेलवे कनेक्शन हेतिला कोस्टल ओडिसा डेवलपमेंट पय कटक टू पुरी अरे बा आउथरे कोन मासी गली एते तो कोन याद करची SPC 10 गाइस गाइडेंस अंडर जीव पारी आ कोन निज पाटे रे निजर प्रशंसा करबी त माने आसले जानिबो आस एंड बिफोर दैट जो माने भी जीव एटे को गोटे मेसेज कर दबा दैट आई वांट टू गो अंडर द SPC 10 दैट्स इट आसो व्हेन वाज द रेलवे लाइन फ्रॉम भुवनेश्वर टू खोर्धा ओपन एबे को भुवनेश्वर टू खोर्धा आपनकर केबे ओपन हैला भुवनेश्वर टू खोर्धा आपनकर केबे ओपन हैला रेलवे लाइन क्विक 90 ये ता परे हेसी आपनकर केबे हेसी सॉरी देखुना 1896 रे हेची द रेलवे लाइन फ्रॉम भुवनेश्वर टू खोर्धा ओपनड इन 1896 विथ द फर्स्ट ट्रेन रनिंग इन जुलाई 20 1896 बट ट्रैक हेतिला आगो कोन कटक टू पुरी आफ्टर दैट आपनकर हैला भुवनेश्वर टू खोर्धा क्लियर 1896 सहित रिलेट करिवो व्हेन वाज उत्कल सभा एस्टैब्लिश ए उत्कल सभा को मते कहिलो केबे एस्टैब्लिश हेतिला 80 85 82 90 80 85 82 90 जल्दी सी 82 श्योर लॉक कर देबी कौन ना घुनघुटी और कौन ना रे सेटा घुनघुटी हां हो सो राइट आंसर कौन होची आपनकर 1882 सो उत्कल सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 कहा द्वारा पता गला मधुसूदन दास एंड गौरीशंकर रॉय मिसी के आपन करथले एठी फकीरमोहन सेनापति भी आपनकर किछि हेल्प करिथिले सो इन कटक टू द स्पेरहेड सोशियो पॉलिटिकल अवेकनिंग द latter function as an early wing of the Indian National Congress for Odia आपनकर उत्कल सभा कोन करथला ना आईएनसी सहित टाई अप करके ओडिसा रे प्रमोट हेथिला नेक्स्ट मते को which of the following was the first political organization formed by educated Odia people जल्दी कहले उत्कल सभा ओडिया नेशनल कांग्रेस नहीं आपनकर कोन ज्ञानतंत्र परिषद बिजु जनता दल बहुत रे फास्ट हेले आपनकर कोन कहबे उत्कल सभा क्लियर नेक्स्ट मते को where was the first meeting of उत्कल सभा held कोठी हेतिला उत्कल सभा सेते बेले भुवनेश्वर पुरी ए सब नाही फास्ट आपण माने मुंडी जगह को धरिबे दैट वाज कटक so the first meeting of the उत्कल सभा was held in Cuttack specifically at the premises of the Cuttack printing company on the August 16 1882 कौन हेतिला ना कटक प्रिंटिंग कंपनी जब एस्टैब्लिश हेतिला अगस्त 16 1822 सॉरी 1882 आपको भी मन रखो सेबे आपनकर कटक हेतिला गोटे क्वेश्चन दीटा आंसर क्लियर नेक्स्ट मते को हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल विथ नेशनलिस्ट स्पिरिट इन ओडिसा किए करिथिले गोपबंधु दास केबे 1919 एंड एठी आपण माने रिलेट करि परिबे काहाकू ना पंच सखा मानकू क्लियर काहा को रिलेट कलो ना पंच सखा को आपण माने एठी रिलेट करि पारिबे क्लियर आचार्य हरिहर आपनकर पंच सखा मध्यरु जणे थिले क्लियर चलो नेक्स्ट मते को गोपबंधु दास वाज फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल इन ओडिसा अराउंड 19 कहली कि सॉरी 19 कहि देली 19 9 रे आपनकर समाज हेति सॉरी 1909 रे आग सत्यवादी हेतिला तापर 1919 रे आपनकर समाज हेतिला डेट उडा टिके बुझी पारुथो
sorry हाँ so establishing a nationalist educational institution focused on Indian values, social reforms and inclusive learning free from caste distinction. Next हाँ अच्युतानंद दास भी थिले ऑप्शन थिले कि अच्युतानंद दास से भी आपनकर थिले मते को हु वेयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ उत्कल सभा रिस्पेक्टिवली फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले फर्स्ट सेक्रेटरी थिले एटा आपनकर गोटे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम रो मन रख जल्दी आचार्य हरिहर थिले एंड आपनकर गोदा परिस बोधे थिले से भी थिले एक्जेक्टली ना पांच जनक ना थोड़ा संगे संगे मन पड़ियो नेक्स्ट मते को हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ उत्कल सभा रिस्पेक्टिवली जल्दी गौरीशंकर रॉय एंड मधुसूदन दास समस्त ऑप्शन कौन आछि ऑप्शन डी एठी ए अछि कोन उत्कल सभा 1882 had a गौरीशंकर रॉय as its first president and the मधुसूदन दास as its first secretary कोन अछि ऑप्शन ए गौरीशंकर रॉय के सहित मधुसूदन दास वाला कॉम्बिनेशन आपनकर गौरीशंकर रॉय के सहित चौधरी काशीनाथ दास को आपण माने रिलेट करले ना कि मैम ओडिसा पंचसखा और लिटरेचर पंचसखा हाँ पंचसखा जुग अलगा जो थे आपनकर पांच जन जो अच्युत अनंत जसवंत जगन्नाथ बलराम तांकु रिलेट करिवे ये पंचसखांक सहित आंकु रिलेट करा जाउतला जेहेतु सेतिकी नॉलेजेबल पर्सन एमाने सब थिले हैना आपन नीलकंठ दास गोदावरी मिश्र हैला एमान को नेकी आपन माने हबो आचार्य हरिहर आउ जने थिले मने पड़नी देखो गोपबंधु आचार्य हरिहर गोदावरी मिश्र कृपा सिंधु भी थिले आउ जने के थिले नेक्स्ट मते को Which newspaper was associated with Gaurisankar Roy one and only Utkal Deepika केबे हेतिला 1866 रे हेतिला and who acted as the secretary of Utkal Sabha किए ना गौरीशंकर रॉय who acted as the secretary of Utkal Sabha it was Utkal Deepika जे की पब्लिश करथले 1866 रे clear the newspaper associated with Gaurisankar Roy who acted as the secretary of Utkal Sabha was Utkal Deepika in the year 1866 at the period of Na-anka Durഭിksha. Next question, in which year did the Utkal Sabha and the National Society send their delegates to attend the session of the INC 1880, 84, 86, 80, 90? जल्दी 80, 84, 86, 90 कोटा हबा राइट आंसर कौन कहउछ सब ऑप्शन बी 84 ना 86 In which year did the Utkal Sabha and the National Society send their delegates to attend the sessions of the Indian National Congress? That was 1886. But it is mate confused laguchi. So the Utkal Sabha and the National Society sent their delegates to attend the session of the Indian National Congress in 1866. Right achi 1866 mo bhabi deithili. It was 1886. That was right. So sorry wala. This was all about today's session. एतिकी क्वेश्चंस थिला आपण मानकर एई पर्यंत कोन ए जो फ्रीडम रिवोल्ट्स एगुडा आपनकर ओवर हेची होप आपण माने सबुतिक आंसर भलो से पढिबे रिपीट करिवे हमर ओडे रैपिड फायर राउंड रहइबो ता विषय में कहूची व्यस्त कोनी तो अगेन कहूची जे ओडिसा सिविल सर्विस समस्त जाओनी किछि रिवील करिवार अछि तो जाओनी कि तो विश्वास पैच आपण माने नै परिबे 1 इयर वैलिडिटी सहित प्रीलिम्स ओनली 6999 जदि प्रीलिम्स प्लस मेंस नउचंती 1.5 वर्ष वैलिडिटी 11999 जदि आपण माने मेंस पय नउचंती ताहाले 8999 जदि ऑप्शनल बैच नउचंती ताहाले आपनकर 4099 ए नंबर को कांटेक्ट करके आपण माने नै परिबे नेक्स्ट देखो टीचिंग एग्जामिनेशन पय द्रोण एसएसपी टीजीटी पय 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 चाणक्य बीएड पिलांक पय 2 इयर वैलिडिटी सहित 1999 कौटिल्य केबीएस एमबीएस पिलांक पय 1.5 इयर सहित 2499 नंबर दिया जाइछि आपण माने कांटेक्ट करिकि जाय परिबे वन डे एग्जामिनेशन पे अगेन कहूची उत्कर्ष बैच आपण नेबे 1199 सहित एटा आपण नेबे न नेबे दैट्स अप टू यू आपण को बजट पे डिपेंड करे बट 199 देकी गाइस टेस्ट सीरीज को परचेज करिबे निहाती एटार लॉन्चिंग अछि मंडे बट आगु आपनकर अवेल हे जाइछि आपण माने जदि जिबे वेदांग क्लासेस ऐप को जाई कि परचेज करि परिबे एंड बाकी मु कोन प्रोवाइड करिवि त आपण माने जानि छंती ना राइट काली संडे रे क्लास हुई नी रे बाबा संडे रे क्लास हुई नी ये रहिला एसपीजी 10 जदि आपण माने नौ चंती माने पूरा तम माने पय जीवन मु दे देबी
तमाने नियो मु बस तमन जीवन दे दैट्स इट आउ कोन दरकार तमन को थैंक यू सो मच गाइस टेलीग्राम चैनल आपण मानके मोते सुदीप्ता जीके नेटवर्क रे इंस्टा रे फॉलो करि पारे अपार्ट फ्रॉम दैट मु त माने गोटे प्रपोजल दोछि त माने सेटा केते दे ठीक हबो मते कहिबो ओके तो गोटे रैपिड फायर राउंड हमर करिबा पिकनिक ना छे ना चलो पाठ पढ़िया छाड़ी के जते मजा मस्ती त माने को मुंड को पसु गोटे रैपिड फायर राउंड करिबा कोन ना जते बेले एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस आपनकर सरी छिबो एंड 200 भी छाड़ी दियो सब दिन धरनियो 30 टा क्वेश्चंस और 30 रु 40 एंती किछि धरुची 24 36 एति के आपण मान धरन 24 ही धरन हैला तो 250 ऑन एन एवरेज देखो 250 आपण मानकर सब संडे दिन एटा आईठी हे परिबनी एटा ओनली एप्लीकेशंस रे हबो गोटे टेस्ट टाइप रे आपण आसी के देबे सब संडे दिन टाइमिंग मु आपण को कहिबी एप्लीकेशन रे सेटा समस्त के पई मु फ्री करि देबी सेटा रे पोल सिस्टम थिबो टॉप 10 पिलांगर ना ऊपर बाहरिबो तो आपण को जोटा पढिबार अछि सेटा मु जो पीडीएफ पठेइची सेगुडा को तमे नेकी पढि के आसीबो वीकली दीटा हेई परिबनी सतीश भाई वीकली गोटे ही पॉसिबल हैला कारण वीकली दीटा हेले क्वेश्चंस काई 250 क्वेश्चंस मींस समान को धरिनो टाइम रैपिड फायर मींस सेठी तमे पचारिबोनी टाइम सेठी तमान को मेंटेन करिया को पड़ियो तमे केते कम टाइम भीतर तमे आंसर दोचो एटा देखो मन रखो जिनसटा तमान को पे मे बी नुवा एटा ऑन एकेडमी टाइम रे हम बहुत थरा करिछु एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल आपण मान को टाइम स्लॉट भीतर 10 सेकंड भीतर आंसर देबार अछि एंड जो पिलांगर ठीक आंसर पुनी कंसिस्टेंस टाइम रहिबो जते कि टाइम कम गैप भीतर आपण माने देबे आपण मानकर टॉप 10 भीतर ना आसीबो सो दैट आपण मान को भी गोटे मन भीतर आसीबो एक्साइटमेंट कि हमको टॉप 10 ने आसीबे अछि आपण माने पढी के आसीबे तो पीडीएफ रे जहा क्वेश्चन अछि सेही क्वेश्चन ही मु पचारिबी नॉट आउट ऑफ दिस तो ता अकॉर्डिंग आपण माने भाबंतु केते जल्दी जल्दी आपण मेमोराइज करि के आसीबे मैम हिस्ट्री रो सबुथि रो हबो हिस्ट्री रो जियोग्राफी रो कहली ना जो वीक रे जहा सब मु पढेइची 6 दिन जाको सेटा रे आपण मान को देबा को पड़िबो ना पेड पिला नुह सब फ्री पिला ओनली पेड पिला नुह सब फ्री पिला को सेटा अवेलेबल संडे दिन सेटा मु फ्री करेबी सब पिला सेटा को देई परिबो क्लियर ओनली संडे रे ता केमती कोन हबो जिनसटा मु त मान को डिस्कस करबी काली नाही आपनकर नेक्स्ट संडे टू एटा स्टार्ट करबी हैला ओके ता पई त माने डिगे सेटा टाइम सब मु त मान को शेयर करबी व्यस्त होनी ता पई सब शेयर करबी गोटे शॉर्ट्स बनै की YouTube रे छाड़ीबी आपण माने YouTube शॉर्ट्स रे टिके अपडेट बस हैला जेमिति हेले थरा सीजीएल हमको क्रैक करिवार अछि हैला वेदांग क्लासेस रे 50 पिला जिबार अछि टारगेट एति की सेट करी की माइंड रे रखो त माने गोटे सीट दरकार मते 50 टा पिला मोर दरकार दैट्स इट चलो थैंक यू सो मच एंड काली पिकनिक अछि कोठी अछि त माने को रील्स रे पठे रील्स बॉडी अपडेट रहिबो मान पाखु जीवो चलो thank you so much guys have a good night take care of yourself but first of all do prioritize your parents this should be your first priority no one else in the world thank you so much and I love you all 500 plus vacancy 1500 plus vacancy ना 500 plus घर कथा है हाँ सतीश भाई चलो बाय बाय